पाकिस्तान रूस से पायदार ताल्लुकात कायम करना चाहता है। दुनिया के बेशतर ममालिक रूस की कोरोना वैक्सीन से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान से तवानाई फ्लैगशिप मनसूबे नॉर्थ साउथ गैस लाइन पर भी बात हुई। दफ्तर ख़ारजा आमद पर रूसी वज़ीर ख़ारजा का शानदार इस्तकबाल। सरगई लारोफ ने यादगारी पौधा भी लगाया। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई। दोस्त हूँ, दोस्त रहने दें, दुश्मनी की जानिब ना धकेला जाए। जुल्म बढ़ता जा रहा है, मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क की 80 शुगर मिल्स में से उन्हें सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया। अकाउंट क्यों मुंजमद किए, इससे क्या फायदा, कौन कर रहा है? लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 10 अप्रैल तक की तौसीक कर दी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 102 अफराद जाँ बहक। 4004 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर हबीब कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। लाहौर में मास्क न पहनने पर 586 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में 50 साल से जायद उम्र के अफराद की कोरोना रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर गौर मुतवक्के। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के नोटिफिकेशन पर भी तबादला ख्याल होगा। हम्माद अजहर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी आज होगा। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ सूबाई मुहतसिब पंजाब के सख्त फैसले। करोड़ों रुपए मालियत की 351 कनाल 14 मरला जमीन बागुजार। गवर्नर पंजाब को सालाना रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मुहतसिब की कारकर्दगी को मिसाली करार दे दिया। कहते हैं कि नाजायज नाकबीजीन के खिलाफ हुकूमत की दो टोक और वाज़ेह पॉलिसी है। पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहती है कि मंझधार में फंसी लड़खड़ाती पीडीएम की कश्ती से मांगे तांगे के मल्लाहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। एएनपी ने भी पीडीएम को हाईजैक करार दे दिया। एएनपी ने पीडीएम का सोक तवील कर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के खिलाफ दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमा। हलीम आदिल शेख, सुमैर शेख और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख बोले कि अदालती फैसले पर सिंध हुकूमत कुत्ते के कांटे के मुतासरा अफराद को मुआवजा दे। पाक बहरिया के जहाज PNS अजमत का ईरान का दौरा। बंदर अब्बास और ईरानी बहरिया के अफसरान और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के मिशन कमांडर की ईरान के सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर। दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। PNS अजमत की ईरानी बहरिया के जहाज़ों के हमरा मुश्तरका बहरी मश्क में शिरकत। Look into the investments and economic cooperation, sky's the limit. We've decided and we've agreed that, we could not hold our bilateral political consultations because of the COVID situation, but we've agreed that during this year, hopefully soon, in Moscow, we will convene the intergovernmental mission. And that will lay the foundations for a more meaningful economic interaction between Russia and Pakistan. We also took stock of the energy cooperation between two countries and the north-south gas pipeline. I'm happy to share with you that we have overcome
many of the impediments, and I have reassured we received their response on some of the amendments that we had proposed to the intergovernmental agreement on the 2nd of April. That is under consideration, and I have reassured the Foreign Minister that Pakistan wants to go ahead and is committed to this project because we are net beneficiaries. We are energy deficient, and we benefit from it. We've also looked at our cooperation in defense, counterterrorism, and we feel that we have, within our framework of dialogue, strategic stability and counterterrorism opportunities of interaction, and we feel that we can help each other, and I am grateful to the Foreign Minister. He has acknowledged the progress Pakistan has made in defeating and reversing, terrorism and extremism, and they are more than happy to even further build our capacity on that score. We've also discussed the Afghan situation. Today, Russia and Pakistan see eye to eye on a lot of issues that are being discussed in Afghanistan. We are both interested in restoring peace and stability, and there's very good cooperation taking place on that score. We've also discussed the successful, the successful expanded Troika meeting, the possibility of another Moscow format meeting, and instructed our envoys to stay in close contact, to remain in touch and coordinate their positions. I briefed the Foreign Minister on the larger question of peace and security in South Asia, our perspective. I gave him our perspective, the fragility of the situation on our border with India, the situation in Jammu and Kashmir on human rights is a concern, has been a concern, but I also shared with him a recent positive development, and that is that both sides have recommitted to ceasefire. The understanding, 2003 ceasefire understanding, which is definitely a reduced tension and has been welcomed on both sides of the line of control. So there's a lot I can say, but I have limited time and he has to speak and we have to go and meet the Prime Minister. I would conclude by saying that this visit is an important visit. It has taken place after almost a decade, and we feel this visit will further deepen our bilateral relations and our friendship, and we intend to maintain this momentum and our high-level contacts. And I would want to conclude on this quote from a famous Russian poet who happens to be the Foreign Minister of Russia and my guest, and I quote, "The road ahead is just the beginning of the road home." So welcome home to your region. Большое спасибо, уважаемый господин министр, дамы и господа. Я хотел бы начать с выражения признательности нашим пакистанским хозяевам за очень радушный и теплый прием. Thank you very much, Prime Minister. I would like to state that I'm grateful to our hosts in Pakistan who have accorded us a very cordial welcome. Российско-пакистанские отношения носят конструктивный, взаимовыгодный характер. Relations between Russia and Pakistan are constructive and mutually beneficial. У нас установился доверительный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. We have established a confidential political dialogue, including at the high and highest levels. И отрадно, что регулярность двусторонних контактов удалось сохранить, несмотря на пандемию коронавируса.
And I'm glad that we were able to preserve our dynamic political dialogue despite the pandemic of the coronavirus. Мы удовлетворены тем, что прошлый год стал рекордным для двустороннего товарооборота. Его объем увеличился более чем на 45% и достиг 790 миллионов долларов. I am satisfied by the fact that the mutual trade has increased by 46% and hit the record $790 million. У нас общее мнение, что это не предел, и нужно искать пути по дальнейшему углублению нашего экономического взаимодействия, и решающую роль здесь призвана сыграть межправительственная комиссия, заседание которой в этом году должно состояться в России. And we both agree that this is not a limit and we should further develop our economic relations. The key role here is played by the organization and by the session of the Intergovernmental Commission, and this year it takes place in Russia. У нас состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в энергетике. Флагманский проект здесь – газопровод Север-Юг из Карачи в Лахор. We've also discussed our cooperation in the area of energy, and the flagship project here is the gas pipeline north-south in Lahore and Karachi. У нас есть соответствующее межправительственное соглашение 2015 года. Сейчас уточняются некоторые вопросы, которые станут частью протокола к этому соглашению. Надеюсь, что он будет подписан, и мы сможем быстро приступить к работе. Here we have an agreement of 2015, and we have been discussing the protocol to this agreement, and as soon as it's signed, we can launch the construction of the pipeline. Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники. We've confirmed that we stand ready to strengthen the anti-terrorist potential of Pakistan, including by supplying Pakistan with the special military equipment. Мы считаем, что это отвечает интересам всех государств региона. This serves the interests of all states of the region. Договорились продолжать практику регулярных совместных тактических учений в горных условиях «Дружба», а также военно-морских учений «Аравийский муссон» по борьбе с терроризмом и пиратством. We also agreed that we need to further conduct exercises and drills in the mountains called Friendship and maritime exercises called Arabian Monsoon. Совпадающих или близких позиций мы обсудили международные дела. Besides, we discussed international affairs where we have congenial